Okay, so where do we begin? We are in Unit 5. Yeah, still we are in Unit 5. We haven't moved on to Unit 6. Sorry. Okay. Okay. Abhinav, oftentimes you drop out of the class before the class is over. Why? Just that my internet connection was not stable, sir. That's why Oh, when I I understand. when I uh, joined the class, just I got out. Then Yeah, yeah. after 2-3 times, I decided to leave the class and watch recordings. Yeah. Athar Noman, you have been very regular to the class, Athar. Yeah, hi. Hello, sir. Good morning. Good morning. You haven't been very regular, Athar, lately. You come here like a guest for one day and then you go absent for 10 days, 15. Because we don't have much more time and we have to travel this time. That's the problem. days. Because And Faizan Ali is already on the way to work. He's got his helmet on. Good morning, sir. Hello, Kushi. Mehran is here. Mehran, your idea to attend the physical class was great. That would help you so much, Mehran. Okay, so the sooner the better. Okay. Okay, And sir. it's good to see you, Shazia and Afreen, in the class. But beta, keep your cameras on. It helps me. I have told you, when you guys are on camera, I can read your facial expressions when I'm teaching you. Okay, people, I shared 5.15 with you, the audio file, and I'm gonna play the audio file, 5.15. Okay, let's let's check your audio script and let's understand what they're saying in the audio. 5.15. Yes, please. Tape script 5.15. Verb plus Verb noun. plus noun. 1. 1. You send a lot of text messages. Okay, verb plus noun. Verb plus. Now, So, yes, verb plus noun. You send a lot of text messages. yes, Here, the verb is send. What is the noun? We are learning verb plus noun, right? Yeah, we have verb. What is the noun? Hello? yes, sir. Noun text message. Send Yes, Kushi. Text messages, okay? Text messages, yes. You send a lot of text messages. I know. My mobile phone is my best friend. sound I is not know. clear, sir. My mobile phone is my best friend. In a way, it is true. Our mobile phone is our best friend, closest friend. It knows everything about us. Our mobile phone. Where is your brother today? At home? Why? Unbelievable. Tasif, you are not here. And I remember once you said, if I don't come, nobody comes. But Mudassar has proven you wrong today. Mudassar is here in the class, even though you are not here. Amazing. One day, Tasif said, that if I don't come to the class, nobody comes. Like Sahil and those two brothers, Saim and Moon. Just tell them one thing from my side, okay? That giving up will not solve their problem. Okay? Someday, the problem with Saim and Moon is guardianship.
Their problem is the guardianship. They don't have the right kind of guardianship. That's the real problem with them. They are both teenagers and they need proper guardianship. Unfortunately, their mom is a lovely woman. I've met her. Okay. But the problem is she is just a mother. Sometimes boys need a dad as well, and I think that is missing there. They need to understand a little bit of their own responsibility. But just tell them that giving up is no solution to a problem. Fighters don't quit. Okay, even Sahil is here online when he is not in the physical class. I really appreciate this, and I know how poor English Sahil's English was, how poor it was, very poor. Okay, it still is very poor. He does not understand sentences. You understand sentences when I speak now. Okay, Dharmendra, you make some sense. Sahil's English is poorer than yours, but he's regular, and that's what I say. People who join this class should attend the class. The rest is my responsibility. Okay, attend the class, do what I say. I will never judge you for your mistakes. I will never push you I will not put you under pressure here. Just relax and study. So the last line was, you send a lot of text messages and observe the word order in English and compare it to the word order in Hindi. Huge difference. So when we have send, bhejna, send is our verb, okay? Send a lot of text messages. You send a lot of text messages. In Hindi, we have a totally different word order. तुम बहुत सारा text message भेजते हो. Rukhsar is not here. Afreen beta, तुम बहुत सारा text message भेजते हो. So when you speak English, Afreen, then you don't put the words in the same order. Tum, you, बहुत सारा, a lot of, text message, send. ऐसे नहीं बोलना है. ठीक है, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं. हर एक शब्द का इंग्लिश करके उसको रख देते हैं वहीं पे. जैसे you, a lot of text message send. कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है. क्या बोल देते हैं वो? You, a lot of text message send. और उनके दिमाग में चल रहा होता है, बोल तो दिए कि तुम बहुत सारा टेक्स्ट मैसेज भेजते हो, लेकिन इंग्लिश अलग वर्ड ऑर्डर फॉलो करता है. इंग्लिश वर्ड ऑर्डर इज डिफरेंट. इंग्लिश में वर्ब पहले होता है, भेजते हो सेंड, उसके बाद क्या भेजते हो? a lot of text message. ओके, तो और यू सबसे पहले, क्योंकि भेजता कौन है? तो डूअर सब्जेक्ट. ओके, यू सेंड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट मैसेज. ये है एक सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर इंग्लिश का, बहुत बेसिक सेंटेंस. ओके, यू सेंड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस. Then the other person says, I know. He doesn't deny it. He doesn't deny it. Sometimes we deny something. Somebody says, you watch a lot of TV. Then, no, I don't watch a lot of TV. Tasif is here. Good. Sahil, you did the right thing. Sahil, I think, messaged him. Sahil, did you message him? You did the right thing, Tasif. Tasif. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Feeling lazy? No, sir. What's wrong? You're not in the physical class today? Today, your brother has proven you wrong. One day you said, sir, if I don't come, nobody comes. But Mudassir is here. Your brother is here. I'm happy for him as well. And I'm happy that, now you will know that you are studying for yourself, Tasif. You are studying for yourself. Everybody studies for themselves only, isn't it? You study for yourself, right? Everybody studies for themselves. Everybody studies for themselves. You study for yourself. If I study for myself, okay? Yes. All right. Where were we? You send a lot of text messages. Yeah, I know. He said, yes, I know. He didn't deny it. Sometimes you deny when somebody says something like this. Somebody says, you waste a lot of time. Then you clearly say, no, I don't. You don't accept it. He accepted it. He said, yes, I know. My mobile phone is my best friend.
Okay, how many of you feel that your mobile phone is your best friend? I think my mobile phone is not my best friend, but it is my closest friend. I share my passwords with my mobile phone, my bank passwords, okay? My mobile phone knows the people I message, the people I talk to, my mobile phone knows all my secrets. My mobile phone knows all my secrets. Yeah, there is nothing about me that my mobile phone doesn't know. My mobile phone knows my personality as well, right? Because my mobile phone knows what things I do, what kind of topics I talk about, what kind of people I talk to. My mobile phone knows everything. If you want to understand a person, take their mobile phone and analyze everything on their phone. The kind of videos they have, the kind of songs they have, the kind of contacts they have, the kind of posts they have. If you analyze it all, you will get a good idea of the character, personality of the person. Do you agree? If you analyze somebody's phone content, the content in the phone, yeah, then people know a little bit, not a little bit, a lot about their personality. Okay, and their interests. Okay, moving on. My mobile phone is my best friend. Okay. Again, in this sentence also, we have the verb, my mobile phone is our verb, be verb, right? My mobile phone is my best friend. Let's carry on. Point 15. Verb plus noun. 1. You send a lot of text messages. I know. My mobile phone is my best friend. This conversation is very easy for you now. One person says, you send a lot of text messages. The other person replies, yes, I know. My mobile phone is my best friend. I spend a lot of time with it. Now, the next conversation. 2. Do you earn a lot of money? Do you earn a lot of money? Do you earn a lot of money? Now, again, this is not a statement. This is a question. And that's why you earn a lot of money. Just say you earn a lot of money. This is a statement, yes or no? You earn a lot of money. Earn is our verb, right? So when we want to make a question, we have do, because the subject is you. If the subject was he, we would say, does he earn a lot of money? Does she earn a lot of money, right? Do you earn a lot of money? What a question! Mind your own business. The response comes, very surprising response comes. What a question! Mind your own business. She says, what a question! Mind your own business. She liked the question or she didn't like the question? She definitely didn't like the question, right? She says, what a question! Mind your own business. So sometimes people try to mind, M-I-N-D, mind your, Y-O-U-R, mind your own business, O-W-N, mind your own business. Okay. Sometimes when people try to, take interest in those things that they should not take interest in, then you say, hey, listen, mind your own business, right? For example, you are having a little bit of an argument with your wife, and somebody who you don't like, somebody who's not a family member, hey, bhai sahab, why are you shouting at her? Then what will you say? Sir, she's my wife. You mind your own business. She is my wife and I'm not hitting her. I'm just having an argument with her. You
Mind your own business. What is the phrase? Mind, after mind, your own business. Mind your own business. Some people have a bad problem. They don't mind their own business. They don't mind their own business. Some people have that problem. You know, they always interfere in other people's lives, personal lives. They should not. When I was young, I was like other people. I also kind of took interest in other people's personal lives. But slowly and slowly, my personality changed, because of my exposure, because of the kind of people I talked to. They influenced me, and I realized if you want to be happy, don't interfere in other people's personal matters. Allow them their space. You are not God, you don't control everything, isn't it? You should not take interest. Leave it. Sometimes we think we can help people, but I still sometimes interfere in other people's personal matters. When my neighbors are having a problem and they're having an argument or something, I do go and say, is there a problem? I often have this attitude, but my intention is to help them. My intention is to help them, yes. I don't ask people questions like this, unless I'm close to them. I don't ask, hey, do you have a girlfriend? Do you have a boyfriend? I don't ask such personal questions. I don't. Okay, because I think it is going too personal and I'm not close to them. If somebody asks you, somebody you do not know very well, somebody who's not close to you, and they ask you, do you have a girlfriend? Then don't answer yes or no. Why? It's a personal matter. Say, mind your own business, right? If you don't want to share something personal with somebody and they are trying to take interest, they're poking their nose in your personal matter, then you say, hey, mind your own business. So the man asks her, do you earn a lot of money? Then she says, what a question. Mind your own business. Okay, don't ask me how much I earn. If I earn a lot of money or I don't earn a lot of money is not related to you. This information is not. It has nothing to do with you. You should not care about it. You should not care about it, simply. So mind your own business. So Khushi, don't use this line with your husband, okay? Mind your own business. Sometimes, husband asks some question about his wife's mother's family, and she gets annoyed and says, mind your own business, okay? For example, Khushi has a photo of her family, cousins, and there is a pretty girl, okay, with her cousin or something. And then her husband said, Khushi, who is this beautiful girl? And Khushi gets angry. Why is he talking about her? Mind your own business. Okay. Khushi, you understand? Yes, sir. Are you going to use it when your husband asks, who is this beautiful girl in your photo? Are you going to say, mind your own business? Or you will tell him, oh, she is my bua's daughter, she's my cousin, things like this. आपको मेरी बात समझ में आ जाती है खुशी? Yes, sir. अभी समझ में आ गई? Yes. Then you didn't respond. What will you say? Mind your own business, or you will answer the question? ये अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए. नहीं, यहाँ बिजनेस मतलब बिजनेस नहीं होता. माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए. हाँ, नहीं ना. माइंड योर ओन बिजनेस मतलब बेटा अपने काम से काम रखिए. Exactly, because I explained that sometimes people interfere in your personal life and you don't like it.
They ask you something, they do something that you don't like. You say, hey, bhai, mind your own business. Okay, exactly. All right, moving on. Three. Do you live on the third floor? You live on the third floor. An inquiry question, right? Do you live on the third floor? Yes, I have a great view. Acha, how many of you realize that this conversation that we are listening to, जो सुन रहे हैं हम लोग, do you live on the third floor? ये शुरू यहाँ हुआ होगा इसी लाइन से या इसके पहले भी कुछ बातचीत हुई होगी? क्या लगता है? Is it the first line of the conversation or it is the middle of the conversation? What do you think? What do you think, guys? Is it the first line of the conversation or it is the middle of the conversation? From the middle. They can both. It's both. It can both, sir. शुरुआत तो मुझे नहीं लगता. It's not the starting of the Conversation. this conversation. Maybe Yes. he can know them from very I different totally place, agree and with then what you said. I love what you said, Abhinav. Very well done. Yes. कौन बातें कर रहा है? अभिनव नहीं, अब Faizan. फैजान और उसकी फैजान, who are you talking to? Your colleague or your family member? पहले clear कर दो. फैजान, you're talking to your family or your colleague? Or the third party? No, neither. Faijan, please answer. Faijan. Don't mute. Don't mute. What do you guys guess what on the basis of what you heard? Faijan was talking Mind to his your own family or- business. Come on, yaar. Come on, yaar. That's not fair. He's saying mind your own business. Come on. Oh, I didn't like the answer. He's saying mind your. Who was it? Kaun bola? Was it you, Abhinav? Abhinav said mind your own business. Yes, sir. Arey yaar. Why did you have to say this? क्यों बोला भाई? You know that it can come across as rude as well. आपको तो पता है ना? क्या है इसका मतलब? अपने काम से काम रखिए. Yes, sir. It's rude, but Yeah, but I want to know, Faizan, unmute yourself. क्योंकि मुझे comment करना था, इसीलिए. First, I don't want to sound embarrassed. I don't want to be embarrassed, so I want to first confirm with Faizan who was the person he was talking to. He was talking to his family, or okay, on that basis, what is your opinion? जो सुना आपने? I think he was talking to his colleague, or maybe, at home. I don't know. Faizan! No. Yes, sir. Yes. Who were you talking to? Mom, sir. Your mom. Okay, you're talking to your family. Okay. I thought you had left home already. Okay, you're leaving home in a few minutes, I think, right? Yes, sir. Okay. Life, work. It's amazing, Faizan, despite having a full-time job, you have managed to attend the classes for such a long time. And your interest is something that I really, really find commendable, everybody. Normally once people have a job, they start earning money. For them, that becomes the most important thing. And it is definitely the most important thing for Faizan as well. But most people who have a job find it difficult to continue in a spoken English class like he has done. Okay. And we have Abhinav as well. He's also in a job and he's also regular most times, you see. So I hope, Abhinav, you carry on like this, okay? Because this is important, being regular. That's the most important.
let's continue with the last conversation. Do you live on the third floor? Abhinav said a very smart thing. He said, sir, it is not the beginning of this conversation, but it can be the first line in a conversation. It can be the first line in a conversation. हो सकता है कि पहला लाइन हो, लेकिन अभी it is not the first line of this conversation. जिस तरीके से उसने कहा, do you live on the third floor? उसने कहा, yes, I have a great view. I can see right over the town. I can see right over the town. Do you live on the third floor? Normally, it is the middle of a conversation, right? कुछ बातचीत हो रही है, उसमें किसी ने पूछ दिया, do you live on the third floor? Okay. पहला line ये बहुत मुश्किल होगा बोलना, but yes, there can be a situation where you can say, do you live on the third floor? लेकिन mainly आप बीच में ऐसा कुछ पूछ देते हैं, do you live on the third floor? Okay, the person says, yes, I have a great view. I have a great view. Means when you are on a high floor, when you are on high floors, like the third floor, fourth floor, fifth floor, then when you look outside, things look more beautiful. Do you agree? When you are on a height, then you get beautiful views just because of the height. Why do people like going on a mountain? Climbing a mountain is not an easy task. You get tired, right? When you reach the mountain, you are very tired, but still people want to do it. Why? Because once they get on the top, then they look around and it looks so beautiful. The views are so beautiful. So basically, people take all the trouble of climbing a mountain just to see beautiful views, isn't it? I live in second floor, and when I go to balcony, then I have a great views. I can see vegetable seller and a fish seller and cloth seller. Wow, lovely. Yeah. But you don't live in the second floor, you live on the second floor, okay? Okay. Is it a great Live on. view for you, Khushi? For Rukhsar, yes. Okay, for Ruksha. She likes it. She said she likes it. That's what she said. She has a great view. Vegetable sellers, fruit sellers, clothes sellers, okay? And the way she described, she definitely likes those things, right? Because she said in a very beautiful tone, she didn't have any unhappiness in her tone. Tone tells you something, no? I can put 100 rupees on the line to say that Rukhsar likes the view. Why do I know this? The way she talked about it, she sounded happy. She sounded, when she was talking about the, fruit sellers, the fish sellers, and the vegetable sellers and the clothes sellers, she sounded happy when she was talking about it. And that's why I believe that she likes the views. Yes, Abhinav is surprised that how can you like the views of fish sellers and vegetable sellers and these things? Different people, different taste, Abhinav. Yes, sir, definitely. But Yeah. somebody likes that they don't have to go far for the vegetables or fish. That's Yeah, why. exactly. As long as the smell of the fish doesn't reach your home. Definitely, Right? sir. Definitely, sir. Yeah, when the smell of the rotten fish starts to reach your home, that's when the problems begin. Otherwise it's fine. I think it's fine to have the shops near your house. Okay, I just wanted to say that as you can see, Faizan, Rukhsar, Abhinav, Khushi, these people are participating in the conversation. You've heard their voices today. There are some other students who have not said anything, they have been quiet for most part. So I want to say that somewhere it is about striking a balance. I always appreciate people who speak in the class, but sometimes some people overdo it. And especially in the pre-intermediate class, it happens because people don't have a problem speaking English. They start to speak English better. They lose their hesitation completely. They start forming sentences. So some of them speak too much in the pre-intermediate class. And that's where the balance is necessary,
everybody should remember that we are in the class to learn and practice English, right? So we should know that, and always be smart. Sometimes we are a little bit less smart, not so smart, and we don't realize what we are doing. Sometimes we occupy our class time so much, okay? But normally this happens in the pre-intermediate class. It doesn't happen so much in the elementary. Okay. Actually, as long as the class has one talkative person, it's okay. When we have 2 or 3 talkative people, then sometimes there is a competition. Who will speak more? Okay. So where was I? The last sentence. I live on the 3rd floor. Do you live on the 3rd floor? Ruksar beta, you have written the audio script, haven't you? Again, yeah, sir. Come again. You have written the audio script. Yeah, sir. So what did you write? On the 2nd floor or in the 3rd floor? On the 3rd floor or in the 3rd floor in your audio script? On the 1st floor. Sayyid Faiz, do you live on the 3rd floor? Everybody has written on the 3rd floor, right? On the 3rd floor. My point is, you have written on the 3rd floor, then why do you not say on the 3rd floor? Why do you say in the 3rd floor? Take a look, Ruksar. जो पर लिखे ना बेटा उसको सीखना भी चाहिए. Do you Okay, live sir. on the 3rd floor? आपने बहुत अच्छी बात की है. I am happy with your improvement. लेकिन और बेहतर कर सकते हो by paying more Of course, attention. sir. Of course. Good, good. Slowly, sir. Absolutely, Ruksar. And you will always find me there to help you. Don't worry. Okay. You are one of my loveliest students. She's not only lovely to me, she's lovely to everybody. She's not nice to me only, she's nice to everybody. I have never seen her quarreling with anybody, saying rude things to anybody. She's nice to everyone. And in her afternoon class, people call her Ruksar Api. How do you like that, Ruksar? Ruksar Api? No, I don't like the Ruksar Api. Why not? Why not? Because मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, sir. I'm not that old. I'm not that Yeah, I am not old. Yeah. old. Well, utni badi nahi. I'm not that old. I'm not that old. Okay. Okay. Thank you. Now, next. Let's continue. Four. Do you Excuse me. Do you live on the 3rd floor? Yes, I have a great view. I can see right over the town. I can see right over the town from the 3rd floor. You can see over the town. Yeah. Can you see over the town from the ground floor? No. No. When in Bihar Sharif, if you are at Pahadi Pe, you can see right over Bihar Sharif, isn't it? wear a suit and tie when you go to work? No. Do you wear Do you suit and wear- tie? Do you wear a suit and tie? Do you wear a suit and tie when you go to work? Some people wear a suit and tie when they go to work. Do you know that? Some people wear a suit and tie when they go to work. Which people? People who work in shops. Nah, normally they don't. People who work in multinational companies, right? They wear a suit and tie sometimes when they go to work. Okay. Oh, no. Where I work is very casual. He said, no, I don't. I don't wear a suit and tie. Where I work is very casual. Where I work is very casual. Casual, C-A-S-U-A-L, okay, casual. Where I work is very casual.
Where I work is very casual. Do you understand casual means? I'll tell you. I'll tell you. You are traveling, okay? You are traveling, okay? You are wearing shorts and a t-shirt, okay? And your cousin is also traveling with you. He's wearing a suit and a tie, okay? Who is wearing casual clothes? You or your cousin? Me. You are wearing shorts and a t-shirt, okay? And your cousin is wearing a suit and tie. Who is wearing casual clothes? Sir, You or your cousin? Me, sir. t-shirt and shorts is casual. Shorts and a t-shirt are casual clothes, right? Yes, sir. Shorts and t-shirt are casual clothes. Okay. All right. Let me say, if I say Mahashay, okay, okay, nahi Mahashay, ऐसी बात नहीं है. So Mahashay is a casual word or not a very casual word? Nah, you're not getting it, huh? Okay, wait. No, sir, it's not When you- very casual. It's not a very casual word. Okay. The way you talk to your papa and the way you talk to your principal, okay, when you have to decide, one is casual. Usually, which is casual? The way you talk to your papa is casual style, or the way you talk to your boss is casual style, or the way you talk to your principal is casual style? Usually, Usually we talk with father. we talk to our father in a casual Casual. style, in a casual tone, in a casual tone. When you know somebody for a very short time, okay, you've known somebody for a very short time. For example, you've known them for 5 days, 6 days. Do you talk to them very casually or you talk to them slightly formally? When you have known somebody for a very short time, for 1 or 2 days or 3 days, then do you talk to them formally or casually? I talk with formally. Formally, you maintain distance, you give respect, right? Yeah. And when you Yeah, have right. known somebody for a long time, if you're talking to your best friend, you talk formally or casually? Casually. Casually, right? So formal and casual are two opposite words, okay? When you maintain distance in style, that is formal, okay? And when you appear close and warm, that is casual, okay? My style, my teaching style is very formal or casual? How would you rate this class? This class is very formal or this class is casual? It's Casual. very casual. Yeah, the style is casual, but the content, the purpose is not casual, okay? We have a very serious purpose here. We want to improve our ability to understand English, speak English, but the treatment is casual. It means I try to keep my students comfortable. I try to be friendly with them. I don't want to make them feel under pressure when they are with me. So I am a casual person in my class. My style is casual, my behavior is casual, my tone is always very casual, okay? I don't ever say, Mr. Mudassir Khan, would you like to explain? I don't have this tone with you, right? I always say, hey, Mudassir, right? So that is a casual tone, okay? Like that. So, fine. So the person asks, do you wear a suit and tie to go to work, when you go to work? Then the man says, no, I don't. Where I work is very casual. My office is very casual. Where I work means my office. Where I work means my office, right? My workplace. Where I work is very casual. Where I work is very casual. I wear jeans and a t-shirt. I wear jeans and a t-shirt. Okay, usually your teacher, I mean to say me, okay, your teacher, usually your teacher wears casual clothes or formal clothes? Usually. When I go to market, then I wear
नकाब, it's very casual. Okay. क्या खा लियो? क्यों, कौन हेल्प कर रहा है Sir, रुकवार तुम्हें? can I one thing? Can I ask one? Sir, I can hear Hello, sir. Dilshad's voice. Look, sir, I can No, hear sir. Dilshad's voice. Dilshad isn't here, sir. Dilshad. No, sir, please. Okay. I'm just joking. Okay, I'm just joking. See, totally, this is called rile up. Okay, to get emotional, you know. Because She's Dilshad go to Bhopal, sir. he is in Bhopal, not go to. Yeah, गलत बोल yeah, गई बेटा. yeah. Bhopal. He is Bhopal, yeah. He is in Bhopal. Yes. Athar, you were saying something. पता है सर, I have जब facing जब मैं खुद a बोलती हूँ problem. और आप में यकीन नहीं करते हैं ना सर, मुझे मतलब पता नहीं है, मुझे अजीब होने लगता है। तो मैं बोल रही सर, बिलीव क्यों नहीं करते हैं? तुम्हें खुश होना चाहिए. या हाँ या ना? क्यों खुश होना चाहिए? कि वाओ, मेरा सेंटेंस इतना अच्छा है कि सर को लग रहा है कि मैंने नहीं लिखा. बात समझ में आ रही है? खुश होना चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हो आपने खुद लिखा. मान लो मैंने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई और आप कह रहे हो ही नहीं सकता कि आप बनाए. इसका मतलब इट्स वेरी गुड ना, तभी तो बोल रहे हो. तो इट्स एन इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट. इट्स एन इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अथर. Yes, just I have facing some problem for writing mail and reading mail. This is kind guide how to do practice for email writing for you. Because we are facing too much problem. The last of 15 days. Hello, sir. So Athar Numan is saying that he is having problems writing email. Okay, he can't write emails very well, so he needs my help. Okay, चलिए देखते हैं. ओपन माइंडेड रहिएगा, ठीक है. जो बात बोलूंगा प्रैक्टिकली सोचिएगा कि सही बोल रहा हूँ या नहीं, उसके बाद जवाब दीजिएगा. ओके. अथर नुमान, अगर वो कह दे कि आपको जो ईमेल लिखना है वो हिंदी में लिखना है, फिर आपको परेशानी होगी या नहीं होगी? If I write in formally way, then sometimes we are मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा. अगर वो कह दे कि आपकी भाषा, आपको हिंदी में ईमेल लिखना है, इंग्लिश में नहीं, तो फिर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये पूछ रहा हूँ. आपको कोई परेशानी होगी या नहीं होगी? अथर, आपको परेशानी होगी या नहीं होगी? जवाब मिल गया दोस्तों. ऐसे हजारों लोग भरे पड़े हैं जिनको ये बात नहीं समझ आती है कि जब आप एक लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, सही तरीके से, शुरुआत में खाली थोड़ा सा सीखे तो नहीं. जब एक लैंग्वेज, जब इनको हिंदी में लिखना है तो ईमेल लिखने में इनको मुश्किल क्यों नहीं आती? बताओ क्यों नहीं आएंगे इनको? इनको हेल्प नहीं चाहिए फिर, क्योंकि इनको हिंदी भाषा समझ में आती है. इनको पता है कौन सा शब्द का क्या मीनिंग हो सकता है, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा शब्द यूज करना है. जब ये पिताजी से बात करते हैं, माँ से बात करते हैं, म्यूट योरसेल्फ अथर फॉर अ सेकंड. जब ये पिता से बात करते हैं, माँ से बात करते हैं, तो ये वो भाषा नहीं यूज करते जो अपने बॉस से करेंगे हिंदी में. यानी हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान होना इनके लिए यूजफुल है या नहीं है. अगर आप ऐसे ही कोई गांव से एक लड़के को उठाएं जिसको सिर्फ मगी बोलना आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत हिंदी लिखना पढ़ना आता है, बहुत अच्छा नहीं, और उसको कहीं ईमेल लिखने के लिए, वो फिर भी स्ट्रगल करेगा, हाँ या ना? हिंदी में भी, क्योंकि उसको अच्छी हिंदी नहीं आती, वो ज्यादातर मगी बोलता लिखता है, ठीक है, वो बस थोड़ा बहुत हिंदी लिख पाता है. तो प्रॉब्लम भाषा की प्रॉब्लम ईमेल लिखने में है. हाँ जी, प्रॉब्लम भाषा का है. कोई आकर मेरे को कहता है ईमेल लिखना सिखाओ, कोई कहता है न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाओ, कोई कहता है ऐसे लिखना सिखाओ. और मैं सबको बोलता हूं कि अगर तुम्हारे हिंदी में करना हो वो चीज,
तुम्हें परेशानी होगी? कहते हैं नहीं। मैं कहता तो इंग्लिश सीखो ना भाई, इंग्लिश सीख जाओगे। तुम ईमेल लिखना चाहो ईमेल लिख लो, तुम ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, क्योंकि तुम्हें ये सब चीजें करनी आती है हिंदी में। प्रॉब्लम हो जाती है जब तुम्हें इंग्लिश में करना होता है। तो तुम्हें कौन इंग्लिश स्पेशली ईमेल के लिए सिखाएगा? तो मैं 4-5 फ्रेजेस सिखा सकता हूं जो ईमेल लिखने में यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन कंटेंट कैसे लिखोगे? 4-5 फ्रेजेस तो बता सकता हूं ईमेल लिखने के लिए, ठीक है, शुरुआत कैसे करनी है, आखिर कैसे करना है। लेकिन सवाल है, वो कहेंगे ये सब मुझे पता है। फिर से अथर के पास जाऊंगा। हाँ हाँ, इस अथर, अथर, आपको शुरुआत में और आखिर में मुश्किल होती है या बीच में मुश्किल होती है? When I will start the content, do the just mention the problem and वही प्रॉब्लम आती है ना, देखा? yeah. प्रॉब्लम मेंशन करने में मुश्किल आती है, एंड स्टार्ट और एंडिंग में नहीं आती। तो कोई फॉर्मेट में क्या सिखाएगा? स्टार्ट और एंडिंग सिखाएगा ना। हर इंसान की प्रॉब्लम अलग अलग होगी ना। ईमेल लिखते समय क्या प्रॉब्लम बताना चाह रहा है, वो सेंटेंस पहले से टाइप कर सकता हूँ, मैं इनको सिखा सकता हूँ कि कैसे ये। I wanted to explain in a mail in a simple way. रुकिए, But मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, पहले जरा रुके। और ये बात सबके लिए दोस्तों, ये चमन्नी अठन्नी के पीछे मत जाओ, ठीक है, पहले समझ लेना। मैंने कहा ना कि मेरे पास ऐसे बहुत लोग आए हैं, कभी कोई कहता है मुझे ईमेल लिखना सिखा दीजिए तो प्लीज, कोई कहता है मुझे नोटिस लिखना सिखा दीजिए, कोई कहता है मुझे लेटर लिखना सिखा दीजिए, कोई कहता है ऐसे लिखना सिखा दीजिए, ठीक है, कोई तो आके कहता है डिसर्टेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो बस यही बात होता है कि जब आप बिना क्वालिफिकेशन के उस जगह पे, तो आपको मुश्किल होती है। जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आपको ईमेल लिखने की जरूरत है अपने जॉब में, तो इसका मतलब आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में ईमेल लिखना है, हाँ या ना? और अगर आपको इंग्लिश में अपनी बात बतानी नहीं आ रही, तो आप ईमेल में क्या करेंगे? उलट पुलट। अभी आप सब ईमेल लिख सकते हो, मेरी बात सुनना। अगर किसी को ईमेल में लिखना है कि हमने आपका सप्लाई और आपका ऑर्डर को ये सेंड कर दिया है, ठीक है, आप तक 23 तारीख तक पहुंच जाएगा, किसी को ईमेल में ये लाइन लिखना है, ठीक है, 23 तारीख तक पहुंच जाएगा, आपने इतने पैसे भेज दिए हैं, इतना पैसा बाकी है, इसको भी भेज दीजिए, ठीक है, इतना बात लिखना है। तो जब ये हिंदी में लिखना है तो आराम से लिखा रहे, इंग्लिश में लिखने वाला है, अगर इसको इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी की तरह इंग्लिश कर देगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो जब ये कहते हैं कि इनको मुश्किल होती है, तो इनको मुश्किल किस चीज में होती है? ये कहेंगे ईमेल लिखने में होती है। ये बहुत बेवकूफी वाली बात है। मैं अथर को पूरा मौका दूंगा अपनी बात बताने का, लेकिन मैं अपने तरफ से जो बोल रहा हूँ वो सुन लो, और उसमें कहो कि कुछ गलत है। कोई कहे मुझे ऐसे लिखने में मुश्किल होती है, भाई साहब, तुम्हें अगर ऐसे अरेंज करने मुश्किल होती है तो अलग बात है, तुम्हें इंग्लिश भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें कुछ 4-5 टिप्स चाहिए, सिर्फ बात समझ में आ रही है, और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन अगर भाषा के साथ प्रॉब्लम है तो सालों के इश्यूज हैं, फिर सालों लगने वाले सही करने में, हाँ या ना? तो भाषा को समझना अलग चीज होता है, भाषा की प्रॉब्लम से बहुत सी चीजें होती हैं। मुझे आप एक ऐसे लिखने के लिए कहोगे तो मैं कहूंगा ऐसे मेरा शानदार नहीं होगा, लेकिन उसमें लैंग्वेज का एरर तो नहीं आएगा ना। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप मुझे पोएम लिखने के लिए कहो, मेरा पोएम बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो मीनिंगलेस उठ पटांग इंग्लिश लिख दूं उसमें, क्योंकि मुझे इंग्लिश भाषा आती है, तो मेरा पोएम बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, क्योंकि मैं पोएट नहीं हूँ। मुझे कोई आप कह दो एक लेटर लिखने के लिए, ठीक है, तो लेटर में कोई खास चीज नहीं होती, मैं अपनी बात बता दूंगा जो बतानी चाहिए, उसमें कुछ खास अरेंजमेंट नहीं होता। तो अथर नुमान को ईमेल लिखने में इश्यू क्या है? और ये सोच रहे कि ईमेल लिखना सीख लेंगे, बगैर पूरा इंग्लिश लिखे ईमेल लिखना सीख लेंगे। और ईमेल लिखने में इनको कहाँ मुश्किल होती है? जब ये अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम बताने के लिए कि ईमेल में जो लिखना है, कंटेंट जिसको कह सकते हो, वहां परेशानी होती है। तो ये परेशानी का सोल्यूशन ईमेल लिखना सिखाना है या इंग्लिश इंप्रूव करना है? अब आगे अथर से सुनिए। अथर आप बोलिए। लैंग्वेज जरूरी है, बट सर अभी तक तो मैं जितना भी मतलब अपने आप में इम्प्रूव हुआ, आपका हेल्प और थोड़ा अपने सपोर्ट से। देन पिछले कुछ दिन से मैं क्लास भी अटेंड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा न्यू साइड है और बैंक सेक्टर है, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, ये बड़ा चैलेंजेस है। और इसलिए फेसिंग हो रहा है कि जब मैं मेल कर रहा हूँ तो मेरा क्लाइंट देख रहा है, मेरा बॉस देख रहा है, मेरा सुपर इंजीनियर देख रहा है। देन वी आर ट्राइंग टू राइट अ मेल जस्ट सिंपली वे, देन वी आर see my mail, some sentences is wrong,
then I अभी will आप try जो बोले to. वो गलत नहीं बोले क्या? सिंपली वे, आई एम राइटिंग ईमेल इन सिंपली वे। सिंपली वे होना चाहिए था, इन सिंपल वे होना चाहिए था। Yeah, simple सिंपल way. और सिंपली आपको नहीं पता चलेगा तो आप कभी सिंपल की जगह सिंपली, सिंपली की जगह सिंपल लिखोगे, सामने वाले को मुश्किल होगी, क्योंकि जिसको पता है उसको अजीब लगता है ये। आपको नहीं पता तो आपको अजीब नहीं लगता। आप बोल सकते हो सिंपली वे, हम लोगों को सुनने में अजीब लगता है सिंपली वे। हम अगर हम आपके टीचर ना होते तो हम आप पे हंसते सिंपली वे ऐसे करते हम, ठीक है। अगर हम आपके बॉस होते तो आपको गोल करके उसको बताते ये क्या है, सिंपली वे, ठीक है। तो ऑब्वियस है, आगे बोलिए। गलतियां होंगी आपसे, क्यों नहीं होंगी? क्योंकि आपको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती। नहीं, ऑलरेडी जो इंजीनियर है वो सपोर्ट करता है कि यू कैन लर्न, नो प्रॉब्लम, एवरीवन लर्न हियर। कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं कि भाषा जो है थोड़ी ऊपर नीचे है तो आदमी सीख जाएगा। सही में सीख जाते हैं लोग मेहनत करके भाषा, ठीक है। तो बस सब लोग आपसे कुछ ऐसा ही मतलब कुछ मतलब क्या ऐसा उसके लिए प्रोसेस है जो मैं ट्राई करूँ और कम टाइम में थोड़ा इम्प्रूव हो सके। आप एक तरह से इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि सर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर बैठा के लोगों का। नहीं सर, कह रहे क्या, कह रहे क्या मैं कि कोई ऐसा रास्ता है शॉर्टकट जिसमें मैं तो सभी को जब यही रास्ता मैसेज होता, देता हूँ। अब आप रहने दो, मैं अब आप रहने दो। मैंने आपने साबित कर दिया कि आप सोचते वोचते नहीं हो, समझदारी नहीं है आपके अंदर। सॉरी टू से दिस, ठीक है। मुझे बोलने की आदत है जस्ट कर। क्या कह रहे हैं, सुन रहे हो ना कि एक शॉर्टकट इनको दे दूं मैं, तो आप लोगों को तो लंबा झूठ मूठे में फंसा के रखा है, क्योंकि इनको मैं शॉर्टकट दे सकता हूँ। क्या Yes, बात करते हो sir. यार, Because we can't attend a long time class, but बात करें आप। already इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्टकट है, आप हंसते रहें, no, इसी को कहते हैं बेवकूफी, ठीक है। भाई साहब, कोई चीज ना करना अलग चीज है, और कोई चीज के गलत चीज में फंसना उस बेवकूफी के लिए जरूरी है। मान लो कि मुझे कोई कहे कि इटालियन सीख लो, ठीक है, तो मुझे जरूरत है इटालियन सीखने की, मान लो, और मुझे कहा जाए I know the मैं अपने आप को, language मैं समझदार हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे सीखूंगा। वही कहे 5 महीने में सिखा देंगे, 4 महीने में सिखा देंगे आपको इटालियन, ठीक है, बोलना। कोई कहे ऐसा, प्रॉमिस करे, तो मैं उसको लात मार दूंगा उस आदमी को, कहूंगा कि तुम धोखेबाज, क्योंकि मेरे पास कॉमन सेंस है। लोग कहते हैं ना कि 2 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे, उसके बाद गायब हो जाते हैं लेकर के। ऐसे ही लोग किए ना आज तक, जितने लोग फंसे हैं फर्जीवाड़े में। लालच तो दिया होगा ना, तो लालच किसको आता है? जिसका दिमाग कमजोर रहता है उसको, कि जिसका दिमाग समझदार रहता है वो लालच में आता है। नॉर्मली लालच में होता है जो कमजोर दिमाग का होता है। वो लॉजिक नहीं कर पाता कि ये चीज अगर संभव होता तो इसका नतीजा ये होता कि इसको पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे बताओ, अगर किसी को दुगना पैसा करने का कॉन्फिडेंस है 2 साल में, बैंक कितने पे लोन देती है दोस्तों? 9 से 10% पे लोन दे देती है। तो 2 साल का लोन इंटरेस्ट कितना होता है दोस्तों? 18 से 20% होता है इंटरेस्ट ना। तो अगर हम 2 साल में बैंक को 20% देंगे, बाकी 80% मेरा हो जाएगा कि नहीं होगा? हम 2 साल में दुगना कर ही सकते हैं पैसे को, तो फिर हम तुमसे क्यों मांगेंगे? क्यों रिटेंगे? करवा लो इंटरेस्ट, इसमें जमा कर दो पैसा, बहुत फायदा है, 2 साल में दुगना हो जाएगा। क्यों करवाएंगे हम तुमसे? हम आराम से आके बैंक से नहीं करेंगे। तुम अगर फंसे मेरे लालच चक्कर में, इसका मतलब तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, हाँ के ना? तो वैसे ही स्टूडेंट्स इंग्लिश में फंसते हैं, ठीक है। ये अथर नोमान महीने में 1 दिन क्लास कर रहे हैं अभी फिलहाल, और उसके बाद माना कि इनका लाइफ मुश्किल है, मैं इसके लिए कोई दिक्कत नहीं कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कोई शॉर्टकट बता दीजिए जिससे हो जाए। अगर शॉर्टकट एग्जिस्ट करता तो मैं तुम लोग का तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि तुम लोगों को शॉर्टकट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। कीप लुकिंग अथर, कीप लुकिंग फॉर द शॉर्टकट। आपने 10 साल 15 साल में इतनी इंग्लिश सीखी है, याद रखिएगा, जितनी सीखी है। not the shortcut and the process. I will ask I will ask you process. प्रोसेस I'm not सही है जो मैं करवा रहा हूँ। shortcut to दिस write. इज द प्रोसेस, I can दिस इज द प्रोसेस understand. अथर। पूरी दुनिया के सक्सेसफुल स्टूडेंट का प्रोसेस सही है। Right. सुनो, उसको रिवाइज करो और उसके जैसा सेंटेंस लिखो ताकि दिमाग में उस सेंटेंस का जगह बन जाए। दिस इज द नेचुरल Like प्रोसेस। इसके अलावा I'm totally agree your words. no, you don't agree. You don't agree. Don't say these things. You agree. If you had agreed, it's useless now. I'm now losing it. Okay? 2 बातें ऐसा ना बोलिए जो एक दूसरे को काटे। एक तरफ आप कहते हैं आई कंप्लीटली अग्री। कंप्लीटली अग्री मतलब समझते हैं? उसका मतलब है कि हम पूरी तरह से सहमत है। पूरी तरह से सहमत है तो फिर कुछ जगह बचा, तो फिर बट कहां से आएगा? ऐसे नहीं करेगा बट उसके बाद।
तो फिर कंप्लीटली अग्री करते होते तो अब तक बहुत इंप्रूव कर गए होते। ठीक है, देखें मेरे साथ क्या है कि मैं आपको बच्चा समझ के डांट के नहीं पढ़ाता, कभी नहीं। ठीक है, मैं आपको हमेशा जो आपकी उम्र है उसको रिस्पेक्ट करते हुए बताता हूँ। उसके बाद आपके अंदर अगर दिमाग में बचपना है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। एक समझदारी की उम्मीद करता हूँ लोगों से। बहुत पहले अभिनव को समझाया था। अभिनव जब शुरुआत में आए थे तो आई टोल्ड हिम दैट अभिनव रिमेंबर लर्निंग, रिमेंबर अभिनव, एक पूरा क्लास हम लोगों ने बिताया था इस बारे में बात करते हुए। यस सर। हाँ, तो ये बात मैं बता दूं आप सब लोगों को कि लोगों को जो गलतफहमियां हैं इतने चारों तरफ से आई है कि उसको सच्चाई मान लिए है। मैं इसको फिर से रिलेट कर दूंगा उसी बात से कि दुनिया के ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक भगवान है, एक गॉड है, एक अल्लाह है, राइट? मानते हैं ना? अब उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि चारों तरफ से बात सुनने को उनको मिल रही है। पैदा होते के साथ कोई बच्चा बोल दे तो कि भगवान है, नहीं होगा। उसको लोग बोलेंगे, उसके बाद वो बोलेगा। बात समझ में आ रही है? तो वैसे इंग्लिश में क्या होता है कि आपको लोग बोलते हैं कि थोड़ा देर का काम है। आप इस बात को नहीं देखते हो कि आपको 10 साल स्कूल में पढ़ाते हैं इंग्लिश, पहला क्लास से 10वां क्लास तक, और तब आपकी इंग्लिश किस लायक होती है? 10th क्लास लायक से। फिर 11 12 में फिर इंग्लिश है। बात समझ में आ रही है? तो वो उम्मीद करते हैं आपसे कि 11 12 में आप सीखे उसको, यानी 12 साल। और आप लोग को सारी इंग्लिश सीख जानी है कितने दिनों में? 4 महीने में और 6 महीने में फ्लुएंट हो जाना है। अगर कोई 4 से 6 महीने में फ्लुएंट हो जाता है इंग्लिश, जो नहीं जानता इंग्लिश अच्छा, ठीक है, तो फिर वो क्या करता भाई? 10 12 साल क्या कर रहा है स्कूल में? क्यों कर रहा है वो? इसका मतलब इट टेक्स टाइम। हाँ, जब बड़े हो गए तो क्षमता बढ़ गई है, ज्यादा कर सकते हैं मेहनत। इसीलिए 2 साल में भी एक लैंग्वेज सीखी जा सकती है काम लायक, कि आप उससे बातचीत कर सके। उसके सारी चीजें नहीं जान जाएंगे, बट काम लायक आप 2 साल में सीख सकते हैं। बट फॉर दोज 2 years यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ। और लोग खाली इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। सबका प्रोसेस एक है। आपको कोई चीज सामने रखा जाएगा पहले कि देखो ऐसा होता है, आप कहोगे अच्छा, फिर आप उस तरह का सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे। आप देख, उसमें 1 2 गलतियां होंगी, टीचर आपको बताएंगे ऐसे नहीं ऐसे। ओ अच्छा, बार बार ये जो ओ अच्छा आप बोलते हो ना, यही आपका सीखना। कब मुंह से नहीं बोलते, कभी कभी दिमाग में बोलते ऐसे करते होंगे आप कोई बात पे, वही आपका सीखना। जब आपको कोई चीज समझ में आए और बोलते हाँ, अच्छा, हाँ, यही है सीखना। इसको कहते हैं ऑब्जर्व कर लिया उसमें दिमाग। और जहां पर ये नहीं चल रहा है वहां पर ऑब्जर्व कम कर रहा है आपका दिमाग। तो that was a completely useless conversation where you wasted your time saying that you have problems with your email. if अगर आपको ईमेल लिखने में दिक्कत हो रही थी तो आपका दिमाग को ये कहना था यार मुझे अपने क्लास को रेगुलरली करना चाहिए था, मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती। क्या आना चाहिए था ख्याल? मान लो कि अभी कोई किसी को परेशानी हो रही है कुछ करने में, और उसने काफी क्लासेस मिस किए हैं, 40% 50% क्लासेस मिस किए हैं, तो उसके दिमाग में क्या चलना चाहिए? यार अगर वो हम लगातार करते रहते तो थोड़ा बेहतर रहते अभी से। ठीक है, तो बस यही खाली सोचना चाहिए था। इसके अलावा कोई और चीज सोचा किसी ने तो उसका मतलब उसका दिमाग लॉजिकल नहीं है। आप लॉजिकली नहीं एक्चुअली ये मेरे माइंड में डेली चलता है कि मैं डेली क्लास मिस कर रहा हूँ। तो मेरे लिए मतलब अगर मैं एक चीज एक दिन में सीखता हूँ तो हम अगर 10 क्लास मिस किए तो 10 मिस कर दिया मैं। लेकिन अभी मेरे रॉन्ग साथ रॉन्ग 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 रॉन्ग। इन्होंने कहा अगर एक दिन एक क्लास में सीखते हैं तो 10 क्लास सीखे तो 10 चीज मिस कर दिए। रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। आदमी लैंग्वेज, अरिथमेटिक लैंग्वेज सीक्वेंस में नहीं सीखता। अगर अरिथमेटिक में कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस समझते हो, सुना है अरिथमेटिक सीक्वेंस? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसा है। इसको कहते हैं अरिथमेटिक। 2 4 6 8 10 12, 2 2 2 2, इसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस में कोई नहीं सीखता लैंग्वेज। अगर अरिथमेटिक लैंग्वेज में सीक्वेंस में लैंग्वेज सीखा जाता तो जिंदगी नाकाफी होती लैंग्वेज सीखने के लिए। आदमी लैंग्वेज सीखता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या होता है कि आपको 2 चीजें बताई गई, फिर 2 चीजें बताई गई तो 4 हुई, लेकिन फिर अगर 2 चीजें बताई गई तो 6 नहीं होती, वो 8 हो जाती है। क्योंकि वो जो 4 है ना, ये 2 के साथ इंटरेक्ट कर जाता है, 2 जाकर जुड़ नहीं जाता उससे। इसको रट्टा विद्या कहते हैं, जिसमें जुड़ जाता है जाके। और जो सीखा जाता है उसमें 4 और 2 इंटरेक्ट कर लेते हैं तो 8 बन जाता है। फिर अगर 2 चीज और आती है आपके पास तो 8 और 2 मिलकर 10 नहीं होते लैंग्वेज लर्निंग में। वो 8 जो आप पहले से जानते हो ना, इसमें 2 इंटरेक्ट कर जाता है, 16 हो जाता है। और इस वजह से आप देखते होंगे
कि जो बच्चा 2 साल में कुछ बोल रहा है, 1.5 साल में कुछ बोल रहा है और 2.5 साल में बहुत कुछ बोलने लगता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए जो इनका सोचना है, तो एक बच्चा अगर 1 साल में 2 वर्ड बोलना शुरू किया है, तो 2 साल में 4 वर्ड बोलना चाहिए उसको। 2 साल में 4 वर्ड बोलता है या 400 वर्ड बोलता है, सोचो। और उसके बाद तीसरे साल में तो 10,000 वर्ड्स बोल रहा होता है। कैसे हो जाता है ऐसा? क्योंकि लैंग्वेज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीखी जाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रिजल्ट बहुत भयानक होता है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 ऐसे करेंगे, बहुत बड़ा संख्या मिल जाएगा बहुत कम समय में। एंड दिस इज हाउ लैंग्वेज इज लर्न। क्योंकि आप जो जान गए ना, उसमें जो नई चीज सीख रहे हैं, वो इंटरेक्ट करेगा उसके साथ, जाके बैठ नहीं जाएगा सिर्फ। वो रट्टू विद्या में होता है कि वो जाके रखा जाता है वहां पे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बात मैंने अभी आपको सुनी कि वो 4 चीजें नहीं छूटी आपकी, आपने जो किया। अगर आप 10 क्लास छोड़े हैं तो 2 दूना 4 दूना 6 दूना 8 ऐसे बढ़ता चला जाता। समझ गए? ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज माहौल से सीखी जाती है, इसको संख्या से जोड़ने का जरूरत नहीं है। आप देखें कि जो लोग इंग्लैंड जाकर बस जाते हैं, वो साल भर में अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। ठीक है? तो क्या होता है, क्योंकि चारों तरफ से बम्बार्डिंग होता है। तो 90 मिनट्स ऑफ दिस क्लास कैन मेक अ डिफरेंस टू योर अंडरस्टैंडिंग। बट अथर नुमान, you couldn't find time, no problems. Try again. I know you need English, but the problem is somehow, देखो अथर, याद रखना, कम समय में लैंग्वेज नहीं सीखी जाती है। इसके लिए जरूरी है कि आपका दिमाग बहुत तेज हो। एक एवरेज आदमी का दिमाग ऐसा होता है जो 2-3 साल में सीखता है लैंग्वेज। ऑलरेडी आपने ये बात शायद मैंने जब क्लास अटेंड किया था फर्स्ट या सेकंड डे में बोला था, लैंग्वेज एक मतलब टाइम लेता है, टेक अ टाइम। तो मैं वहाँ पे इस बात पे 100% श्योर हूँ कि किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए टाइम चाहिए। बट अभी मैं जब क्लास अटेंड करता हूँ या फिर सम टाइम मैं फ्री हूँ, आपका वीडियो देखता हूँ, तो आपका जो मतलब स्पीकिंग है या क्लास का कन्वर्सेशन है, तो मैं अपने माइंड में लाता हूँ कि सर ने किस वे पे किस तरीके से सेंटेंस को कहा है। मतलब हम ग्रामेटिकली नहीं जाते हैं, बट कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं या फिर कोई भी बोल रहा है, तो उसको एक बार फॉलो कर दे और अपने डेली यूज में ट्राई करते अपने माइंड में कि इसको कैसे बोलना चाहिए। और सेकेंडली कि मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ, रीजन है कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ सुबह उठ के। हालांकि मैं अभी जैसे वॉकिंग डिस्टेंस पे आया तो मैं क्लास अटेंड कर लिया। आई कैन ट्राई टू अटेंड डेली। बट मेरे साथ यही है कि अभी मेरे को नया साइड मिल गया और क्रिटिकल साइड है। वी हैव हैंडलिंग 37 साइड देन प्रॉब्लम। एवरी टाइम मेरा माइंड में कुछ और चलता रहता है कि किस तरीके से उसको डील किया जाए इफ एनी हैपन, क्योंकि क्रिटिकल साइड है बैंक। कुछ भी इमरजेंसी होता है तो वी आर रेक्टिफाइंग विथ इन 2 hours। so how to manage that one, that this you have to decide it because I met a boy. I met a boy, recently from Qatar, and not from Qatar. He's living in Qatar. He's from Rajasthan, and his monthly salary is 2,500, real, Qatar real. Okay, and he offered 700 real to an Englishman from South Africa, not an Englishman, an English-speaking person from South Africa, to teach him English, 8 classes a week, 2 classes a week, 8 classes a month. And I said, are you crazy? How can you waste that much money? He said, it is like this here. See, you are very lucky, Athar, that you have a class to attend every day where you can interact with somebody speaking English every day. Interaction does wonders to your mind. Okay, instead of reading, learning rules and everything, interaction in a language is the most powerful way to learn a language. When somebody is talking to you, you're listening to them, if you understand a little bit of what the person is saying, and then you respond sometimes, it's the most effective method to learn a language. Most effective interaction. The second most effective method is when you can listen, but you cannot respond. That's the second best. The best is when you have the freedom to respond as well. And when you are in the physical class, you have that freedom. Anytime you can join the conversation with me, right? I encourage, like I talked about Sahil and
Mehran and Shazia and Afreen and Zeba. These guys have been very quiet today. Okay, I encourage them that please join the conversation. Join the conversation, because when you know that you are going to speak, you automatically bring more focus. Think about it. I'm talking to you, and you know that you are going to respond to me. You will listen to me with more focus. But when you think that there are other people to respond, you will not respond. Sometimes you might lose your focus. You will not listen to me with the same intensity because you're not going to respond to me. You know you will not respond. But when you know you will respond, when you're listening, watching the recording, can you respond to me while you're watching the recording? Can you respond to me there? Usually you don't, because I'm not there to listen to you. I won't respond to you, what you said. But a real interaction in the class like this is more effective. That's why I encourage people to be in the class rather than just watching the recording. Watching the recording is the second best thing. The best thing is to be present in the class so that there is a two-way interaction. When I say something, you say something in return, and then I respond to your comment. When you're watching the recording, I won't be able to respond to your comment. So it will be one-way conversation. Only I'll be speaking there. I won't listen to you when you're watching the recording. So watching the recording is the second best option. Please try to be in the class as often as you can. And I understand you have a job. It's not very easy for you with all your busyness and all. All right, let's continue. 5. Can you play the guitar? Yes, I Easy question. Can you play the guitar? Yes, I can. can. And the piano. And the violin. And the violin. He can play a lot of things. 6. Can you ride a motorbike? Can you ride a motorbike? Can you ride a motorbike? And listen to the response from the man. I can. Do you want to come for a ride? Yes, I can. Do you want to come for a ride? Do you want to come for a ride? Do you want to come for a ride? You can sit on the back. You can sit on the back. You can sit on the back. 7. The girl would be a little bit embarrassed, because if a stranger offers you a ride, you might feel a little bit uncomfortable with that. The girl asked him, "Can you ride a bike?" He said, "Yes, I can." Yes. Do you want to come for a ride? Do you want to come for a ride? चलोगी घूमने? हिंदी में क्या बोलते हैं? 2 words. चलोगी घूमने? English में कैसे बोला? Do you want to come for a ride? Do you want to come for a ride? And in Hindi we can only say चलोगी घूमने? Do you want to come for a ride? Can you drive a Can you drive car? Of course not. I'm only 16. Of course not. I'm only 16. 8. You have a full-time job. Who looks after your children? You have a full-time job. Who looks after your children? You have a full-time job. Who looks after your children? They go to play school. Oh, they go to play school. So there are 2 women. One asks, you have a full-time job. Who looks after your children? When somebody has a full-time job, how many hours do they work normally? When somebody has a full-time job, how many hours do they work? No. Normally they work 8 hours, right? Okay. In a full-time job, people normally work for 8 hours. Okay. 9 to 5. 9 to 5. That's a full-time job. 9 to 5. Okay. Now, people need time to travel to work, come back. So sometimes in a big city, it can take an hour or 2 hours just to travel to work and from work. So if a woman is out of home for 10 hours, then her children will be a little lonely or not, right? So the question was, you have a full-time job. Who looks after your children?
This is always a problem with women. When they have a career, they have to really worry about their children. Husbands don't need to worry about it. Husbands go to work, nobody minds. But when women go to work, everybody has this question. Who will look after your children if you go to work? Then she says, they go to a play school. They go to a... Yeah. Can you drive a car? Do you want to come for a ride? But I'm only 16. 8. You have a full-time job. Who looks after your children? Who looks after your children? Who looks after your children? And the answer is... Go to play school. They go to play school. They go to... Play schools are those schools where small children, okay? Play school is for what age groups? What age group children go to play school, guys? Under 4. Under 5, okay? Play school is for under 5. Once you are in 5, small children, 3, 4, 5, they go to play school. Why is it called a play school? Because you don't study with books. You study, it's a school, but you study while playing. So they have such teachers, they have such material that children will be busy playing and they will learn something as well. So you can relax and go to work while your children are at play school. They will have other children to play with. They will have good teachers to look after them. And they will not have to sit and learn to write ABCD there, okay? Play school is for playing and learning. 9. Do you watch TV a lot? No. Do you watch TV a lot? No. Not really. Just Not really. in the Just morning and in the evening and evening. sometimes in the afternoon. And sometimes in the afternoon. Does he watch TV a lot? Do you watch TV a lot? No, not really. Just in the morning and in the evening and sometimes in the afternoon. Answer. Does he watch TV a lot, guys? Yes, sir. Does he watch TV a lot? Athar, does he No. watch TV a lot, Athar? No, sir. Because we didn't. Abhinav, what should I do with them? Do you watch What? TV a lot? No, not really. Just in the morning and in the evening and sometimes in the afternoon. He doesn't watch TV a lot, na? तुम लोग और फिर बोलते हो कि देर क्यों लगता है तुम्हें सीखने में। अभी मैं हंसू नहीं तो क्या करूं, मेरे पास क्या ऑप्शन है। अभी ना ये आदमी टीवी ज्यादा देर नहीं देखता, बस खाली सुबह में। एक आदमी बोला ना, हम ज्यादा नहीं खाते हैं, बस 40 पराठा सुबह में और 30 पराठा रात में, 2 किलो चिकन दोपहर में खाते हैं, हम ज्यादा नहीं खाते। आपसे कोई पूछे ज्यादा खाता है तो आप बोलेंगे नहीं नहीं खाता, ज्यादा बोलता रहा नहीं खाता है। आप इस तरह के इंसान हो गए हैं, क्योंकि उसने कहा just in the morning and in the evening and sometimes in the afternoon। बच्चा क्या बे? सलार्थ में तो तू टीवी देखता है, लेकिन तुम लोग नो नो किए जा रहे भाई। अपना दिमाग नहीं लगाना, टोन नहीं समझना। ऐसे पैदल चलोगे तो बहुत देर लग जाएगा पहुंचने में दोस्त, ऐसे पैदल ना चलो प्लीज। अभिनव यू आर राइट। भाई तुम लोग कैसे सोचते हो? वो बोला कि उसने पूछा डू यू वॉच टीवी अ लॉट, उसने कहा नो नॉट रियली, जस्ट इन द मॉर्निंग, बस खाली सुबह में, एंड इन द इवनिंग, और शाम में, एंड समटाइम्स इन द आफ्टरनून, कभी कभी दोपहर में। मतलब बचा क्या? तुम चले सुबह में देखते हो टीवी, शाम में देखते हो टीवी, दोपहर में भी देख ही लेते हो, तो फिर बचा क्या? और तुम नहीं देखते हो ज्यादा टीवी, और तुम लोग नो नो किए जा रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ डज ही वॉच टीवी अ लॉट? नो नो नो। ऐसे तो हो भाई, तो ऐसे पैदल चलने में समय तो लगता है, कोई गाड़ी से चले कोई पैदल चले,
एक बराबर समय तो नहीं लगना सर। अथर बाबू वो ज्यादा टीवी नहीं देखता। सॉरी सर। अभिनव को मैंने तुरंत चुप्पी से करा दिया था, क्योंकि कई बार आप लोग ना इतने बेईमानी कर जाते हो कि आप अपना दिमाग नहीं लगाते, दूसरे का आंसर कॉपी कर लेते हो। अगर आपको एहसास हो जाए कि अभिनव का आंसर ज्यादातर सही रहता है, तो अभिनव जो बोलेगा आप वो बोलने लग जाओगे, ठीक है? ऐसा होता है, मैंने क्लास में देखा है कि सम स्टूडेंट्स हैव अ रेपुटेशन फॉर बीइंग राइट। ओके, कुछ स्टूडेंट्स बार बार सही जवाब देते हैं, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व की इसका सही रहता है, तो बाद में जब कोई कुछ पूछा मैंने, तो वो जो बोलता है सब उसको कॉपी कर देते हैं। ये नहीं समझना चाहते कि हम क्यों कॉपी कर रहे हैं, हमारा अपना दिमाग नहीं है महसूस करने का। गलत भी करेंगे तो सीखेंगे ना। अब आप अपने आप से पूछिए कि कहाँ फंसे आप, गलती कहाँ हुई आपसे, बताइए अथर, कहाँ गलती हुई? क्योंकि अब आप बहस नहीं कर रहे हो, अब आप मान रहे हो कि हाँ वो बहुत टीवी देखता है। अगर अभी भी आपको लगे कि वो टीवी कम देखता है, तो मैं आपकी गलती नहीं मानूंगा, फिर मैं कहूंगा कि आपने एक खास नजरिए से देखा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो आपने कहा कि फलाना आदमी झगड़े में सही है, एक्स सही है, वाई गलत है। एक झगड़ा हुआ एक्स और वाई के बीच, आपने कहा एक्स सही है, मैंने कहा वाई सही है, तो आप मुझसे बहस करने लगे कि नहीं वाई कैसे सही है, एक्स सही है। तो इसमें कोई खराबी नहीं, क्योंकि आपके पास लॉजिक है एक्स को सही मान लिया, हाँ कि ना? आपने कहा एक्स गलत है, फिर मैंने आगे कह दिया वाई गलत है, आपने तुरंत मान लिया हाँ हाँ वाई गलत है। तो फिर मैं कहूंगा तो फिर आप एक्स को गलत क्यों बोल रहे थे भाई? बात समझ में आ रही है? जब आपको तुरंत मान ही जाना था मेरे बोलते के साथ कि वाई गलत है, तो आप मान ही जाते थे, तो फिर आपने एक्स को गलत किस आधार पे कहा था? मतलब आपके पास अपना कुछ दिमाग है या नहीं है? तो अगर आपने कहा कि वो बहुत टीवी नहीं देखता, और अभी हम लोगों ने जैसे इस तरह से बात की, आपने कहा हाँ हाँ, तो आप उस समय कहाँ गलत साबित हुए थे? आपने क्या गलत कर दिया था जो आपने कह दिया नहीं वो ज्यादा टीवी नहीं देखता? क्या चला, क्या प्रॉब्लम था आपके दिमाग में? क्यों आपको लग रहा था कि वो ज्यादा टीवी नहीं देखता? मैं जवाब दूं इसका? आप महसूस नहीं करते, आप कुछ महसूस करने की कोशिश नहीं करते। आप सुनते हैं, नो सुना तो नो बोलना है, यस सुना यस बोलना, सोचना समझना नहीं होता है आपको, हाँ या ना? इस वजह से गलती हुई, क्योंकि आप तुरंत मान गए हमारी बात। जब हमने कहा कि यार सुबह में देखता है, शाम में भी देखता है, टाइम मिलता है दोपहर में भी देख ही लेता है, तो अब और क्या बचा? खूब टीवी देखता है आदमी, ये आदमी को बहुत टीवी देखता है, नहीं देखता है? अब आप जिद कर रहे हैं क्योंकि मैंने ऐसा बोला, कैसे नहीं? अभी तो थोड़ी देर पहले आप मान ही गए थे कि हाँ बहुत टीवी देखता है। आप तो तीन बार आंसर दिए, पहले बोला नो, फिर यस, फिर अब फिर वापस नो पे जा रहे हो। मतलब सर क्यों? वो बोला नहीं है उसने, उसने कहा सुबह में देखते हैं, शाम में देखते हैं। अब ये तो हम नहीं है हमारे पास इंफॉर्मेशन, बट ऑन दिस बेसिस that he watches TV in the morning and he watches TV in the evening and he also watches TV in the afternoon. What the hell? He watches a lot of TV, obviously. उसने बोला होता जस्ट हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग, तो हम आपकी बात मानते हैं। लेकिन वो जिस तरह से बोला है, व्हाई डू वी बिलीव? हाँ उसको लगता है कि वो नहीं देखता, कुछ लोग अपनी गलती का एहसास वो उसमें से है। He watches a lot of TV, but he doesn't. He wants to watch more, so he thinks he doesn't watch a lot. ऐसा होता है कि आप 1 लाख कमा रहे हो, लेकिन आपका इरादा है 10 लाख कमाने का, तब कहते थोड़ा ही कमा रहे हैं अभी, क्योंकि आपके लिए 10 लाख है टारगेट, तो 1 लाख तो थोड़ा सही अभी। Maybe he watches more in the morning, in the evening, and in the afternoon, but he wants to watch at night too, maybe, you know. So दिमाग लगाइए, ऐसी जगहों पे आप फेल करते हो तो इससे पता चलता है कि you don't have the sense for the language, which is why you guys learn slowly, okay? इसका 10. कोई सोल्यूशन नहीं है ऐसी चीजों का, इसमें कोई ग्रामर नहीं है टीचर का बताने का। He said, do you watch TV a lot? उसने कहा no, I don't actually, just in the morning and in the evening and sometimes in the afternoon। तो आपको हंसना चाहिए था। अभी जैसे मैं आपको बोलूं बहुत ज्यादा खाना खाते हो तुम ना, बस 15-20 रोटी सुबह, 15-20 रोटी रात में, और 2 किलो चिकन दोपहर में, जाते तो नहीं खाते, तो आप हंसेंगे इस बात पे। आपको भी वहां भी हंसना था, बट आप लोग नहीं हंसे, एंड आई व्हेन यू डिडंट लाफ आई रियलाइज्ड कि अरे ये लोग नहीं समझ पाया। I can't speak any foreign languages. I can. German and Spanish. I can German and Spanish. Okay, I will ask you to practice later because I want you to do this exercise now. Practice we will do later, okay? Exercise 9, everybody.
complete this with the prepositions. Main book. Page number 44. Are. Sentence number 1. Do you like listening to music? It's an important preposition in English because in Hindi we say music sunna. So people think, do you like listening music? Like, nahi. Do you like listening to music? Okay. मुझे न्यूज सुनना अच्छा लगता है. I like. बोले? To the news. Okay. I like listening to the news. Okay. मुझे पॉप गाने सुनना पसंद है. I like. Listen to I the like pop. listening to pop songs, pop music. Okay. मेरी बात सुनो. Listen to me. ये स्लो है ना, जंग लगाओ दिमाग. अभी भी आई लाइक लिसनिंग पे तुम अटके हुए. हमें यहाँ बोल दे मेरी बात सुनो, इसका भी ट्रांसलेशन तुम Listen आई to लाइक me. लिसनिंग से कर रहे हो. कुछ अंदाजा है तुम्हें क्या कर रहे हो? कितना नींद में हो तुम? ऑनलाइन होते तो समझ में आता. कैसा चलता है दिमाग? हम बोल रहे हैं मेरी बात सुनो, तुम आई लाइक लिसनिंग. क्या चल रहा है? सीधा सीधा स्लो दिमाग काम कर रहा भाई, और कुछ नहीं. मैंने क्या बोला? मेरी बात सुनो. आई लाइक लिसनिंग कहां से आया? क्योंकि पीछे से चल रहा था. 3 बार पीछे से चला तो तुम चौथी बार में उसको ठेल दिए बिना सोचे समझे. यही बिना सोचे समझे काम करने की वजह से कम सीख रहे हो. फॉर्मूला पकड़ने का क्या मतलब है ये? इस बात का मैं कैसे समझूं, कैसे तुम्हारी रिस्पेक्ट करूं इस गलती के बाद? क्यों तुम इस सोच में बैठे हो कि मैं चौथा सेंटेंस आई लाइक लिसनिंग पे बोलने वाला हूं? क्यों? फिर तो तुम 10 बार वही बोलते रह जाते. आई लाइक लिसनिंग, आई लाइक लिसनिंग, आई लाइक लिसनिंग. महसूस भी नहीं करे तो उसका मतलब क्या हो रहा है? मैंने हिंदी सुनी थी, मैंने कहा था मेरी बात सुनो, बोला था ना. तो फिर ये ऐसे आधी नींद में वाला काम ना करें आप. ऐसे आधी नींद में काम करेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे. सॉरी, बहुत बुरा होगा. ठीक है, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आप जो पीछे चल रहा है वो पैटर्न को पकड़ के बोले जा रहे हैं. हर बार मैं नया सेंटेंस बोलता हूं, उसको सुन के समझ के बोलना है. हाँ जी, मेरी बात सुनो. बोलते बैठ जाओ तो क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? सिटिंग डाउन बोलते हैं कि सिट डाउन बोलते हैं? खड़ा हो जाओ तो क्या बोलते हैं? तो मेरी बात सुनो बोलेंगे तो लिसनिंग क्यों बोलेंगे? दिमाग लगा? क्या बोलेंगे? लिसन टू मी, लिसन टू मी. ओके, ध्यान से सुनो मेरी बात. Listen to me carefully. लिसन टू मी केयरफुली. बेटा क्लास में टीचर की बात सुनते हो तुम? ध्यान से सुनते हो? मम्मी पूछ रही है बेटा, do you listen to the teacher? Do you listen to the teacher in the class carefully? All right, good.
So एक बार एक सेंटेंस से ऐसा नहीं कि वो सेंटेंस 2 लिख दी और मेरा काम हो गया. आपको वैसे सिमिलर सेंटेंसेस सोचने चाहिए. आपको पता चल जाना चाहिए कि अच्छा ऐसे होना है. Number 2, what sort of music do you like? What sort of music means what type of music. Sort means type. What sort of music do you like? What sort of music means what type of music. What sort of movies do you like? Means what type of movies do you like. What sort of girls are your favorite? What sort of girls do you like? Okay. What sort of girls do you feel attracted to? What sort of girls do you feel attracted to? किस तरह की लड़कियों की तरफ आप आकर्षित होते हैं? What sort of girls do you feel attracted to? What sort of girls? Okay, number 3. Where is your girlfriend? Where is your girlfriend? From. From. Is she Mexican? Number 4. Is Paula married? To my. जो लोग विद बोले हैं और नए स्टूडेंट हैं वो तो चलेंगे, जैसे कि हमारा धर्मेंद्र, लेकिन तुम नहीं पढ़े ना कभी. Is Paula married? To Mike. 5. Do you want to come shopping? With me. आसान लग रहा है ना? जिसको सुनने की आदत रही है ना, गणपत अपना मेहनत बढ़ा दो बेटा. और कुछ ऑप्शन नहीं, मेहनत बढ़ा दो, समय ज्यादा देने लग जाओ. बाकी जो लाइटली ले रहे हो इसका लाइटली जवाब ऐसे ही रिस्पॉन्स आएगा फिर. ठीक है. 6. Were there any good programs? Were there any good programs? For Television last night? Next question. What do you want? At your birthday. For your birthday. For your birthday. What do you want? For your birthday. For your birthday. Number 8. Can I speak to Dave? Is he on work Yes. today? Not on work, at work. Okay. Okay, guys, I'm sharing 5.16 with you. Listen to it at home, practice. Lately, I have been sharing a lot of audio files with you, 5.14, 15, 16. Okay, listen to them all, practice, listen and keep listening. That's the only thing you can do at home. I'll see you guys tomorrow, okay? Thank you very much for being with me here. And keep working hard. Your result will be in the same proportion to your hard work. Okay, if you're working harder, your result will be better. See ya. Bye-bye.